Good morning student. Welcome to the biology class. In this video we are going to study about the muscular tissue. Now we are studying about the animal tissue. In the previous class already we have seen the epithelial tissue, connective tissue and their subtype. Now we are in this video we are study about the muscular tissue. Let us move towards the muscular tissue. See student, muscular tissue, it is very abundant tissue, means out of our total weight 40% weight of the body is occupied by the muscular tissue. Means our body, in our muscle, the muscles are present in our all parts of the body. These muscles are made from the muscular tissue. Means देखो बेटा, in the previous class already we have seen the connective tissue like the bone, cartilage, blood and lymph. Okay, means the bones, our all parts of the bone are made from the bone tissue. Means our skeletal is made from the bone tissue. Same like that, our body is also muscle and this muscle is made from the muscular tissue. Understood student? And it is a very abundant tissue. Let us see some characteristics of the muscular tissue. It is composed of the muscle cell or muscle fiber. Means the muscular tissue is a fiber like. Whenever we see the muscular tissue under the microscope, it is the thread like structure, fiber like structure. It is a fiber like structure. So we called the muscular tissue is composed of the muscle fiber. It is elongated, large in size. Have you seen in our bicep, tricep have a muscle and these muscles are elongated, tapering end, fiber like structure. Okay, and this muscle fiber is present contractile protein. Due to this contractile protein we can movement, we can locomotion. Understood? Movement means what student? Movement means what? Means see, we are bend your hand, we can stretch your hand. That times your muscle is, means our bone is movement as well as the muscle is also movement. मसल की मूवमेंट कैसे होती बेटा? क्योंकि मसल में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं. सो वी कैन मूव. मूवमेंट मीन्स सी, वी आर ह्यूमन बींग, वी कैन मूवमेंट ऑल्सो, वी कैन लोकोमोशन. मूवमेंट मीन्स समझ में आ गया बेटा? मीन्स हम हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेन. प्लांट इज ऑल्सो मूव देयर ब्रांचेस. Okay, this is called as the movement. And locomotion means what? Locomotion means we move from one place to another place. It is called as the locomotion. Understood what is mean by locomotion and movement? Understood? And we can locomotion, we can movement with the help of muscular tissue. एंड मस्कुलर टिश्यू कैसे मूवमेंट होते हैं बेटा? क्यों उसकी मूवमेंट हम कर सकते हैं? बिकॉज द मस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. This contractile protein, due to this contractile protein, our muscles is contract and relax. When we bend our hand, that times our muscle is contract. When we stretch our hand, our muscles are relax. And ये contractile protein की वजह से होते हैं. What is student? What is the muscular tissue? I told you in the previous video, animal tissue is made up of 4 types. Epithelial, जो प्रोटेक्शन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है और सिक्रीशन करता है. कनेक्टिव टिश्यू connect the one organ to another. Got it? And muscular tissue are made our muscle, body muscle. Understood? Muscular tissue also have a, देखो बेटा, muscular tissue is present in our bicep, tricep, some internal organs, in our heart. So different parts are present muscular tissue. तो एक type के muscular tissue नहीं हो सकते. It also have a 3 types of the muscular tissue. Skeletal muscle, smooth muscle and cardiac muscle. Understood student? Muscular tissue means हमारी जो muscle बनी है वो कौन से tissue से बनी बेटा? Muscular tissue से. It is also have a 3 types: skeletal, smooth and cardiac. One by one we will see in each types of the muscular tissue in details. First let us see skeletal muscle.
skeletal muscle means, see, I told you there are three types: cardiac muscle, skeletal muscle, and smooth muscle. Cardiac muscle, you know, the cardiac is related to the heart. The cardiac muscle is present only in our heart. हमारे हार्ट की जो वॉल बनी है बेटा, वो कार्डियक मसल से बनी है. एंड स्केलेटल मसल में जो मसल हमारे बोन से अटैच है, दिस मसल इज कॉल्ड एज द स्केलेटल मसल. Understood? जो भी मसल बोन से अटैच है, it is called as the skeletal muscle. And smooth muscle, which is present in our visceral organ, internal organ, like our stomach, intestine, uterus, iris of the eye. Got it? We will see in details each and every types of the muscular tissue. Let us see first skeletal muscle. Skeletal muscle means, why it is called skeletal muscle? Because the muscle is attached to the bones, attached to the skeleton, so it is called as the skeletal muscle. देखो बेटा, स्केलेटल हमें क्या करते हैं? शेप्स देते हैं बॉडी को, साइज देते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को. सेम लाइक दैट द स्केलेटल मसल इज ऑल्सो गिव द means the due to the skeletal muscle we can locomotion, we can movement, our body get a posture means, देखो बेटा, we have a neck, we have a skull, hand, legs, okay, means we get the shape of the body. but अगर मैं खड़ी हूँ तो ये मेरी मसल मुझे खड़े रहने में हेल्प करती है. इट इज कॉल्ड ए पोस्चर. इफ आई एम सिटिंग, माई मसल इज हेल्प टू माई सिटिंग पोजिशन. What it? Posture means the position of our body. Understood, student? Let us see some characteristics of the skeletal muscle. Skeletal muscle fibers elongated and cylindrical. See, there is the structure. This is the structure of our skeletal muscle. Skeletal muscle cylindrical होते हैं. You know, cylindrical shape, like that shape. This is the unbranched. Means beta, you know the branch means, see, this is the branch, this is the branch, okay. but ये जो skeletal muscle है, ये unbranch होती है. means the single cylinder like muscles are attached to each other. Understood? It is the cylindrical muscles. मसल फाइबर इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच है, मीन्स उनकी कोई ब्रांच नहीं है. ईच सेल इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड. मल्टी न्यूक्लियस मीन्स, यू नो, ईच एंड एवरी सेल्स आर प्रेजेंट अ न्यूक्लियस. but in the skeletal muscles are present more than one nucleus, means, so it is called as the multinucleus. Each cell have a 2 3 4 5 nucleus are present in the skeletal muscle. समझ में आया बेटा आपको? मसल फाइबर्स कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स it contain the more than two nucleus, more than one nucleus. Got it? Striations are present. Striations are present. Alternate means, see, what is mean by striation? See this figure. This is the cylindrical in shape. Striation means what, student? Alternate dark and light bands are present in the muscle. Means, see, this is the dark band, this is the dark band, and in between the two dark band have a white band. It is called as the striation. So this skeletal muscle is also called as the striated muscle. Striated muscle. समझ में आ गया बेटा आपको? What the skeletal muscle is called the striated muscle? Because on the muscles are present the striation. Striation means what? Alternate light and dark band are present on the muscle. So it is called as the striated muscle. These muscles are easily fatigue. Means, see बेटा, अगर हमने एक्सरसाइज की, हमने ज़्यादा वर्कआउट किया, तो हमारे मसल थक जाते हैं. मीन जो भी हमारे बाइसेप, ट्राइसेप, लेग्स मसल में जो भी मसल स्केलेटन को जॉइंट है, दीज आर इजीली फटिक. मीन्स देखो, हमने अगर ज़्यादा रनिंग की, हमने ज़्यादा एक्सरसाइज की, तो वो मसल थक जाते हैं. और इट फटिक मीन्स जो थक जाते हैं. एंड ये मसल कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? स्केलेटल पे. तो देखो, अगर हमने ज़्यादा वर्कआउट किया, ज़्यादा क्रिकेट, कुछ गेम्स अपने ज़्यादा खेले, अदरवाइज आपने ज़्यादा एक्सरसाइज की, तो मसल थक जाते हैं. अंडरस्टूड? इजीली
fatigue. These muscle help in the movement of the body. पहले मैंने बताया ये जो स्केलेटल मसल है ये स्केलेटल पे प्रेजेंट होती है. whenever we are move मीन्स जब हम चलते हैं बेटा हम लोकोमोशन करते हैं. when we are stretch our hand, we are relax our hand, that times ये हम कर पाते हैं because of the skeletal muscle. means the skeletal muscle help to us for movement also and locomotion also. These muscles is control in our willpower, so it is called as the voluntary muscles. Means see, if we want to walk then we can walk, if we want to sit in rest then we can sit in rest. अगर मुझे मेरा हाथ हिलाना है तो मैं हिलाऊंगी, अगर मुझे चलना है तो मैं चलूंगी. Means these muscles is control in our willpower, so this muscle is called as the voluntary muscle. Understood student? I told you the three another name of the skeletal muscle. एक तो skeletal muscle. Why? Because the muscle is present on the skeleton. ये muscle skeleton पे present होते हैं इसीलिए हम इसको skeletal muscle कहते हैं. The muscles have a striation alternate dark and light band, so it is called as the striated muscle. The muscles are control in our willpower, so it is also called as the voluntary muscle. Understood? And where it is present? It is present in your bicep, tricep, neck region, legs region. Understood student? Means there we can move our body. जहाँ पे मूवमेंट होती है वहाँ पे ये मसल प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल पे प्रेजेंट होते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट? व्हाट इज द स्केलेटल मसल? नेक्स्ट टाइप ऑफ द मसल इज अ स्मूथ मसल. सी, smooth muscles are spindle in shape. Spindle means see like that structure. आपने देखा cylindrical होते हैं striated muscle, skeletal muscle, but smooth muscles are spindle like shape. Means in middles are thick, in end is a tapering ends are present. It is called as the spindle shape. The single and centrally located. हमने स्ट्रेटेड मसल में देखा बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड होते, बट स्मूथ मसल इज अ यूनी न्यूक्लिएटेड. ओनली सिंगल न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन इट. Striations are absent. We have seen striation means what? Alternate light and dark bands are present on the cell, but in the smooth muscle striations are absent. These muscles in unbranched means all the spindles are like that structures. अंडरस्टूड? मीन्स ये मसल से अनब्रांच होते, इनकी कोई ब्रांच नहीं होती. डू नॉट फटीक मीन्स ये थकते नहीं. आई टोल्ड यू इन द स्ट्राइटेड मसल दिस मसल इज इजीली फटिक. मीन्स अगर हमने ज़्यादा वर्कआउट किया द मसल इज इजीली फटिक, बट इन द स्मूथ मसल इज वेरी स्ट्रॉन्ग मसल, इट नेवर बी फटिक. not under control of our willpower, so it is called as the involuntary muscle. Means the muscles is not controlling our willpower. Means first of all I will told you where it is located. देखो बेटा, these muscles are found in the wall of intestine, you know, small intestine, large intestine, stomach, uterus, जो blood vessels है. The smooth muscles are present on these parts of the body. You know that अगर मैंने कहा अभी मैं डाइजेशन नहीं करूंगी तो ये स्टॉप नहीं हो सकता है. लिसन टू मी केयरफुली. मिस दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर इंटरनल ऑर्गन्स. जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बेटा, जैसे हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लंग्स है, यहाँ पे ये स्मूथ मसल्स. मीन्स आवर स्टमक की जो वॉल है, मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विसरल ऑर्गन. विसरल मीन्स बेटा ऐसे ऑर्गन जिनकी वॉल होती है और बीच में हेलो कैविटी होती है, लाइक आर स्टमक. स्टमक का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा बेटा, इट इज लाइक दैट स्ट्रक्चर. सी अगेन आई विल ड्रॉ द स्टमक लाइक दैट स्ट्रक्चर. दिस इज आवर स्टमक. The wall of stomach is made from the smooth muscle. In the hollow cavity is present inside, so it is called as the visceral organ. देखो स्टमक में जो भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, it is not controlling in our will power. हम बोल नहीं सकते स्टमक को stop the digestion, start the digestion. ये अपने हिसाब से वर्क करता है, so it is called as the involuntary muscle. Got it student? समझ में आ गया आपको स्मूथ मसल क्या होते हैं? स्मूथ मसल स्पिंडल शेप के होते हैं.
यूनिन्यूक्लिएटेड होते मीन सिंगल न्यूक्लियट प्रेजेंट होता है, स्ट्रिएशंस एब्सेंट होते हैं, अनब्रांच होते हैं. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल, नेवर फटीग. These muscles is not control in our willpower. These muscles are means this muscles is also present in the visceral organ, so it is also called as the visceral muscles. And these muscles help to peristaltic movement. Peristaltic movement means what student? देखो बेटा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जब मैंने खाना खा लिया, मेरे माउथ से मेरे स्टमक का खाना इसोफेगस से जाएगा. इसोफेगस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. तो ये इसोफेगस से कैसे जाएगा बेटा? जो मसल्स है इसोफेगस की, वो स्मूथ मसल से बनी है. उनकी कॉन्ट्रैक्शन होंगी, रिलैक्सेशन होंगी. दिस इज कॉल्ड एज द पेरिस्टलाइसिस. एंड ड्यू टू द पेरिस्टलाइटिक मोमेंट आवर फूड इज रीच फ्रॉम माउथ टू द स्टमक थ्रू बाय इसोफेगस. गॉट इट स्टूडेंट? व्हाट इज मीन बाय स्मूथ मसल? स्मूथ मसल समझ में आ गया बेटा? ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं बेटा? हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है, लाइक आवर लंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूटेरस, iris of the eye. Got it? What is mean by smooth muscle? It is opposite to the striated muscle. जो हमारे striated muscle देखे थे हमने, उसके opposite है बेटा. वो सिलेंडर होते हैं, ये स्पिंडल शेप के होते हैं. वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं. स्मूथ मसल इज द यूनिन्यूक्लिएटेड. These muscles have a striation, alternate dark and light band होते हैं. Smooth muscle are absent. वो भी unbranch होते हैं. It is similar structure. It is also unbranched. These easily fatigue, but smooth muscle do not fatigue. Straighted muscles are control in our willpower, so it is called as the voluntary muscle. But smooth muscle is not controlling our willpower, so it is called as the involuntary muscle. Understood, student? What is the smooth muscle? The last type of the muscular tissue is the cardiac muscle. Cardiac muscle. Cardiac muscle, it is very strong muscle, and this muscle is present only the wall of heart. हमारे heart की जो wall है बेटा, you know the heart have a 4 chamber, means उसके hollow cavity है, but जो wall heart की wall है वो किससे बनी है बेटा? It made from the cardiac muscle. It is very strong muscle. It never fatigue. It is continuously work from birth till to the end, means till to the death. It is continuously working. Understood? Cardiac muscle, it is also fiber. Fiber of cardiac muscle is cylindrical shape. See, these muscles is also have a cylindrical muscles. This muscle is also cylinder like structure. The fibers are unbranched and multinucleated, means it is a multinucleated, means the more than one nucleus are present. Branch होती means branch मैंने यहाँ पे देखो, see this structure. This is the one cylindrical shape, then it is divided into the another branch. This is called as the branch like structure. This is the cardiac muscle. It is a branch like structure. अपने branches देखी ना बेटा plant को, one single branch is divided into two branch. Same like that. The fibers are branch, multinucleated, striations are present. में जो cardiac muscle है उसमें भी striations होते. Striations means what? Alternate dark and light band. Do not fatigue. I told you these muscles is very strong muscle. Do not fatigue. थकते नहीं बेटा. जब से हमने जन्म लिया है तब से जब तक हम मरते नहीं, डेड नहीं होते, means the muscle is continuously working from birth till to the death of our body. Understood? Continuously. Our heart is continuously pumping. Heart is continuously beating. Heartbeat पता है ना आपको? Continuously beating means it is a work continuously. So this muscle is do not fatigue. The muscles are also present. These muscles are only present in the wall of heart, not controlling our willpower. This is also involuntary muscle. The muscle is also not controlling willpower. अगर हमने heart को बताया बेटा stop हो जाओ, heartbeat कुछ देर के लिए, the heart is not stop. Heart हमारे हिसाब से नहीं चलता बेटा. It is very strong. It is an involuntary muscle and it is continuously working. And they means due to the cardiac muscle, heart is contract and relax. You know that heart is a pumping organ. हार्ट पंप करता है बेटा, इसीलिए
जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स आर सप्लाई ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इन द हायर क्लासेस you have studied about that. In the previous connective tissue blood I told you what is the main function of heart. हार्ट का फंक्शन क्या है बेटा? ये ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिएंट है हमारे हर एक बॉडी को सप्लाई करता है. मीन्स हार्ट को हमेशा पंपिंग करनी होती है बेटा, में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक बॉडी पार्ट को सप्लाई करना होता है. सो द हार्ट मसल इज वेरी स्ट्रांग. देखो बेटा हमने स्ट्राइटेड मसल देखे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल. स्मूथ मसल देखे बेटा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे. जो कार्डियक मसल में दोनों के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सी हमने देखा स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल होते हैं, कार्डियक मसल भी सिलेंड्रिकल है. फाइबर्स आर ब्रांच, बस इसके फाइबर्स ब्रांच होते हैं. बाकी हमने देखा स्केलेटल मसल स्मूथ मसल इज अनब्रांच. स्ट्राइटेड मसल में मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. इन द कार्डियक मसल इज ऑल्सो हैव मल्टी न्यूक्लिएटेड. स्केलेटल मसल में स्ट्रिएशन होता है, कार्डियक मसल में भी स्ट्रिएशन है. बट कार्डियक मसल डू नॉट फटीग, smooth muscle do not fatigue. It's the same characteristics of the smooth muscle and cardiac muscle, but in the striated muscle is a easily fatigue. The muscles are present only the wall of heart. These muscles are not control in our willpower. Smooth muscle is also not control in our willpower, and due to this muscle the heart is contract and relax. Heart की heartbeat continuously होती है. Why? Because the cardiac muscles are contraction and relaxation. Understood student? Muscular tissue. In this video we have seen the muscular tissue. Muscular tissue, it is very abundant tissue. Out of our total body weight, 40% weight occupied by the muscular tissue. It contains the contractile protein. जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट है उसकी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू. कौन से बेटा? स्केलेटल. स्केलेटल को हम स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं, स्केलेटल मसल को हम वॉलंटरी मसल भी कहते हैं. सेकंड स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल स्केलेटल पे प्रेजेंट होते हैं. बाइसेप, ट्राइसेप, लेग्स, नेक रीजन. गॉट इट? स्मूथ मसल को हम विसरल मसल भी कहते हैं क्योंकि वो विसरल ऑर्गन पे प्रेजेंट होती है. Smooth muscle is also called as involuntary because it is not controlled in our willpower. And cardiac muscles is also present in only wall of heart. Understood student? Today's lecture. In the next lecture I will teach in the last type of the tissue, nervous tissue. Thank you student.